देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये ताज, ये क्राउन, ये टाइटल हिंदुस्तान के लिए नए बिल्कुल नहीं है। याद करिए 1994 में सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, उसके बाद आज हरनाज कौर सिंधु हों या सिनी शेट्टी हों, अब तक 12 से ज़्यादा बार हम ये ऑनर हासिल कर चुके हैं। दुनिया को अपनी ताकत या फिर ये कहें अपनी खूबसूरती दिखा चुके हैं। लेकिन अब हिंदुस्तान में मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइज होने वाला है। आपके लिए न्यूज़ हो सकती है, इसकी डिटेल्स भी आज आपको देंगे। लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है। जल्दी से पहले परिचय करा देता हूं। मेरे साथ करंट मिस वर्ल्ड यहां स्टूडियो में है, मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलाव्स्का। पोलैंड से आती हैं और बाकायदा अपना क्राउन अपने सिर पर सजाकर आज न्यूज़ 24 के स्टूडियो में है। मेरे साथ सिनी शेट्टी हैं जो कि पिछले साल की मिस इंडिया वर्ल्ड विनर हैं और इस बार मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत की तरफ से ताल ठोकेंगी। मेरे साथ यहां स्टूडियो में जूलिया इवलिन मोरली भी हैं। वेलकम टू इंडिया जूलिया। थैंक यू, आई एम हैप्पी टू बी हियर। ओके जूलिया, मिस वर्ल्ड का ये कंपटीशन, ये पेजेंट ऑर्गेनाइज करने में सबसे आगे रहती हैं। और मेरे साथ यहां स्टूडियो में जमील अजमल सईदी भी हैं। जमील वैसे हिंदुस्तानी है, लेकिन इस कंपटीशन को इंडिया लाने में जमील का बहुत अहम योगदान है। मेरी खुशनसीबी है। आप सभी का स्वागत, वेलकम टू इंडिया। सबसे पहले कैरोलिना, हाउ इज इट फीलिंग? हाउ इज इंडिया ट्रीटिंग यू? Oh, India is famous for the great hospitality, and it's been treating me absolutely amazing. It's my second time here. The first time we've been to Mumbai, now we are in Delhi, and I'm looking forward to discover more. Okay, so do you sleep with this crown still, or was it for the first few days only? I wish. No. I wear it only for special occasions. Is it real? It is. Is it heavy? Quite heavy. In case of responsibility, it's very heavy, but it's also a huge honor. Oh, that's a good answer. सिनी, आपने भी ये क्राउन पहना है, ताज पहना है जी सर। और इस बार आपके कंधों पर बहुत बोझ होगा। इस बार इंडिया को जिताना है फिर से। काफी टाइम हो गया। सही बात है। पहली बात तो कि इंडिया में हो रहा है। वी आर द होस्ट कंट्री, आई एम द होस्ट डेलीगेट। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। 140 कंट्री की सारी डेलीगेट्स यहाँ आने वाली है। उन्हें भी इंडिया का कमाल दिखाना हमें। पर काफी टाइम नहीं लग गया इंडिया में ये टाइटल आने में। आई थिंक जूलिया वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस। व्हाई हैज इट टेकन दिस कंपटीशन, दिस पेजेंट so many years to come back to India after 1996? I agree with you. Yeah. It's the whole world. You have to learn to share. Yeah, absolutely. And I wish I could be in India every year. I really do, because everyone here is like coming home. But the thing is that other countries need the tourism too. And for example, we went to China, and China wouldn't let us go for 5 years because they need tourism. Every country in the world needs tourism, and so India, I'm back here. I'm so happy to be here. You've seen all the Indian beauty queens over the years. Yes. So who has impressed you the most so I far? thought you'd ask me that rotten question. And you won't expect me to answer, but what I will say is this. Every single one, honest to God, this is really true. Every one of them has been a big, wonderful example to the world. And I call her my baby, because she was a baby when she won. She was so sweet, and she was always giggling and laughing, and you remember every girl for something special about her. And they're like, if I may say, if I may be so bold, they're like my daughters, because you care for them like that, you know. Absolutely. Such young girls at this age of 18, 19, 20. Yeah, and you're 21. responsible to make sure that they're safe, but also they have their freedom to think and do the things with their families that they need to do. Absolutely. अब सलमान अहमद भी आ गए हैं, फाउंडर और सीईओ हैं PME के। अभी जमील से भी यही बात हो रही थी और मैं इन तीनों से भी यही पूछ रहा था कि इतने साल कैसे लग गए इस पेजेंट को इंडिया आने के लिए? आई बिलीव हर चीज़ का देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। एक समय होता है, एंड द वर्ल्ड इज रेडी टू कम टू इंडिया। और आई थिंक हिंदुस्तान की जो वेयर इट इज प्लेस्ड ग्लोबली, दुनिया में जो जिस जग में है, आई थिंक द टाइमिंग इज परफेक्ट। देर आए दोस्त आए। जमील, इस बार कैसे पॉसिबल हो पाया ये? पॉसिबल तो ये हमेशा था, लेकिन इस वक्त अब हमारे पास हिंदुस्तान को दिखाने का लिए बहुत कुछ है। हिंदुस्तान, अब आई थिंक द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। हम लोग हॉलीडेज़ के लिए बाहर जाते हैं, जबकि हम चाहते हैं पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देखना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग बाहर जाकर हॉलीडेज़ मनाते हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक
और गोवा से असम और गुजरात तक पूरे हिंदुस्तान को इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस खूबसूरत और इंटेलिजेंट लोगों के थ्रू 140 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आएंगे, ये एम्बेसडर्स होंगे, और जब ये वापस जाएंगे तो हिंदुस्तान की खूबसूरती अपने साथ लेके जाएंगे, हिंदुस्तान की यादें अपने साथ लेके जाएंगे, हिंदुस्तान से मोहब्बत का तोहफा अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, why Goa, Salman? Why Goa? Goa is one of the cities at the moment जहाँ गए थे. It was visited yesterday. Smalley went. Mumbai भी है, different states भी हैं. आज announce हुआ है. It's just been announced today. और अब it will be decided कि where is the final, where are the other rounds. हिंदुस्तान बहुत बड़ा है. Okay, so that's news to me. मतलब गोवा ऐसा नहीं है कि सारे इवेंट्स गोवा में ही होंगे. नहीं, it's not. आप इसे नहीं. पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं. हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, और हम लोग शायद शुरुआत इसकी दिवाली के टाइम के आसपास हम लोग कोशिश करेंगे बनारसी साड़ी सबको पहना के और एक गंगा आरती बनारस के तट पे करें, और वहाँ से इसकी शुरुआत हो, मोहब्बत का पैगाम फिर ताजमहल लेके जाएं, और फिर वहाँ से और पूरे हिंदुस्तान में सबको, तो कई स्टेट्स में हम लोग करेंगे. अभी शुरुआत है, इससे बहुत बड़ा वो है. भी बड़ा है जी, देश भी बड़ा है. कितने ड्यूरेशन का होगा ये, और कितने सिटीज में आप सोच रहे हैं इसको ले जाएंगे? It's spread over 30 days. 30 दिन के ऊपर होता है ये पूरा जो actually start to finish है. So the point is कि अगले in the next 6 months इसको किस खूबसूरती से, जिसे जमील साहब ने कहा है, और किस warmth से. And India is about being warm. Absolutely. India is about being probably the biggest heart in the world. And there's a spiritual angle. उसके अलावा something very important, Mrs. Molly, which I think we should touch on. The environmental and sustainability issues. बहुत से, because Miss World is about, it's beauty with a purpose. It's not only a beauty pageant तो or a सिनी पर contest. कुछ ज्यादा प्रेशर होगा क्या इस बार इंडिया में हो रहा है? It's your home country and everybody will be rooting for you. Come on, go for it. I think when I won Miss India, my entire journey was in the preparation कि मैं दूसरे कंट्री में जाके 1.4 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करूंगी. बट यहाँ तो ये हो गया कि अब देश में ही रह के दूसरे लोगों को मुझे होस्ट करना है. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हिंदी भी बोलती हैं, बड़ा अच्छा मौका है. जब ये पेजेंट होता है तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कितने दिन चलता है, और उसमें क्या देखा जाता है? वैसे फ़िलहाल तो ये जैसे इन्होंने बताया कि 30 दिन का इवेंट है. जो स्पेसिफिकेशंस है वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं, बट यहाँ पर काफ़ी कम्युनिकेशन रिलेटेड होता है. इंडिया अगर होस्ट हो रहा है तो इंडिया के बारे में कुछ अपने आप को रिलेट करने के हिसाब से कॉम्पिटिशन्स होते हैं. फिर अपने ब्यूटी विद अ पर्पस, आप जो सोशली चेंज कर रहे हैं, आप सोशली कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, उसके लिए एक कॉम्पिटिशन होता है. तो उसमें कौन कौन से होते हैं? कुछ स्विम वेयर होता है, नाइट वेयर होता है? नहीं, मिस वर्ल्ड में स्विम वेयर नहीं होता है. Okay. जबकि आई थिंक ऐश्वर्या राय का एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा था जहां उन्होंने बोला था कि उन्होंने जूलिया मॉली को रिक्वेस्ट किया था कि स्विम वेयर राउंड, क्योंकि सारे कंट्रीज कंफर्टेबल नहीं होते, उनके कल्चरल बैकग्राउंड नहीं होते. Right. तो जूलिया मॉली ने, आई थिंक शी विल बी द बेस्ट पर्सन टू से. और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसमें फिर? जैसे मल्टीमीडिया होता है, हेड टू हेड चैलेंज होता है जिसमें आप अपनी एडवोकेसी, अपनी जो इसके बाद अपने जो भी BWAP प्रोजेक्ट, ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करोगे. फिर टॉप मॉडल कॉन्टेस्ट होता है, टैलेंट राउंड होता है जिसमें आप अपने देश के डांस के बारे में बताएंगे और अपने टैलेंट के बारे में बताएंगे. डांसर्स ऑफ द वर्ल्ड होता है. मतलब पढ़ना भी बहुत पड़ता है. पढ़ना तो बहुत पढ़ना पड़ता है. सारा जीके आ जाएगा. सब टेस्ट हो जाता है जितना स्कूलों में नहीं हुआ. हाँ. Okay. Which all rounds did you win, Carolina, when you won the competition last year? Well, I didn't win any of the rounds, which is a good sign for every contestant, but but I won the crown, so that is enough for me. Is it very, very competitive, or and does it look as good as it looks on TV, or is there like rivalry going on behind the scenes? I wouldn't say it's very, very competitive because we do support one another. However, of course, it's a little bit tiring because lots of things are happening. And sometimes you only see a little glimpse of what we are doing. You see just the talent round and you don't see the whole preparation to get to that point to be able to present your performance over there. However, the best part out of it is that every single girl is the same position. We have this similar dream. However, we do understand that we are all in it together and there is only one crown, and at the end of the day the most valuable thing you can bring from Miss World are friendships, and to be able that was my next question. You preempted me basically. Do you really make friends?
I really do. Yeah? To be fair and honest to God, I have some wonderful friends around the world, and I know that I can travel to many different countries, and there is always someone to call. So how many Indian beauty queens have you heard of? Aishwarya Rai, Sushmita Priyanka Sen, Chopra, Manushi Chila. You You have heard all of plenty them? of them, yes. So they've all either gone to Bollywood or they've gone to Hollywood. What do you plan to do? I like to try both. Why should I choose between those two? To be fair, I like to try different things in life, and I believe I will be good in movies. You know, it will be fun to try myself in Bollywood, to try all the dances. You And it's very passionate, it's very vibrant and colorful, and you can learn about the culture. Yeah. Are you willing to learn Hindi? I would Or love do you to. know a little bit? No? कैसे हैं आप सब? Say that again. कैसे हैं आप सब? That's cute. Julia, how is this particular competition in Goa, in India, going to be different from the previous editions? Well, we have a very different show perhaps to the one you saw previously here in India. There's 24-hour programming now with webs, with all the things we've got. So it's not just one program. Every night, every day, there's a 24-hour communication going on around the world. And that's essential to tourism, essential to India, and essential for the young women to show, hey mum, look at this, who have I met today? But the actual shows, we've got 5 different major shows going out consecutively before the final. So we really... So how many do you select for the final? Well, it's not there's interviews. You've got the best for singing, dancing, all the different kinds of communications. Beauty with a Purpose has a big award, and the 5 top awards go through to the final, the final 20. Yes, Right. but you've got a 20, final 20. And that's chosen by a jury, a mixed jury around the world. And really, it's a very, very difficult thing to do, because quite honestly, no offense to you guys, but any one of those girls could have won. They were an example to their country, and they're fabulous. They're kids to me, but That they were brings me to brilliant. my next They were question. fabulous. आप ये मुश्किल तो होता ही है ना, इतने सारे 140 देशों से सोचिए, वहाँ की टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट टैलेंटेड एक Most कंपटीशन supported जीत के कोई लड़की and आती most है, supported. मोस्ट सपोर्टेड, एब्सोल्युटली, उनमें से चुनना बड़ा मुश्किल होता है, और ये चुनने का काम भी बड़ा मुश्किल होता है. तो जो जूरी होती है वो कैसे सेलेक्ट होती है, और इस बार कैसे सेलेक्ट होगी? क्या उसमें कुछ इंडियन हमें Again, that दिखेंगे is, क्या? Mrs. Moli's thing. What Miss World की जो भी इनके एक rules, regulations and process है, that is Mrs. Julia Moli, Miss World Organization. Okay, so the host country does not have the privilege to have their own members on the jury? Yes, you do have, certainly. Absolutely. You have 3 or 4 stars. I mean, I don't personally choose everyone, it's recommended. But oh, yes, of course, India needs to be India's presenters, India's, it's India. You have to have a jury, of course, but you would probably have 3 people, very famous people, and then you've got 6 others from different parts of the world. You have to learn to share India, you know? We will have three judges so you need from, them. from You India. need We've been them. large-hearted. Oh, We did you not would be- ask for it for 27 years. Now it's our time. Entertainment है इस साल, it'll be spectacular. सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, even बाहर से. I'm mentioning about that I the would- entertainment happy this for year. you to, yes. You know, the entertainment the जो best ऐसा person to find. ये अलग बात है कि the 71st Miss World हमने तो एक दावे से कहा हुआ है पूरी दुनिया को कि it will be the best. It's never been done before, and we have to prove that to Mrs. Moli and the Miss World organization. और पूरी दुनिया भी देखेगी, पूरा देश भी देखेगा. नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि जमील ने कहा ना कि हो सकता है कि गंगा किनारे गंगा आरती में भी हम उन लड़कियों को ले जाएं. तो अगर इंडियन कलर, इंडियन तड़का उसमें आप लगाएंगे तो उसमें इंडियन बड़े बड़े चेहरे तो आपको रखने पड़ेंगे, चाहे जूरी में हो या उसके प्रेजेंटेशन में हो. नहीं, रखने पड़ेंगे नहीं, हम चाहेंगे वो चाहें क्या वो हमारे साथ जुड़े. हम इसको उस तरह करना चाहेंगे कि बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग ये चाहें कि वो भी इसके साथ जुड़े और हिंदुस्तान को सारी दुनिया में दिखाने में मदद करें. और ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम भी जाएंगे, हम भी सबसे हम्बली रिक्वेस्ट कुछ करेंगे. सुपरस्टार देखेंगे हम इसके 100%. मैंने तो कहा कि हम हमारे जो इंस्पिरेशन है वो शाहरुख खान साहब का जो गाना है कि ऐसा देश है मेरा, वो ऐसा देश है मेरा को हमें 1000 साल की सभ्यता संस्कृति को 28 दिन में पूरा हिंदुस्तान दिखाना है.
ऐसा देश है मेरा, हमें ये दिखाना है। कुछ चीटिंग वीटिंग के थोड़ा बहुत स्कोप रहता है क्या? कैन वी चीट बिकॉज वी वांट हर टू विन? फ्लर्टिंग का तो रहता है, चीटिंग का पता नहीं। वी वांट हर टू विन. How do we do that? How do we ensure that? Cheating की क्या जरूरत? Everybody plays to win, right? Yeah. Yeah. It's not healthy otherwise. But that jury, they come in and it's their problem. Because I wouldn't like to be a judge. I really wouldn't. How can you choose between these two? Absolutely. You can't. But It's the most ultimately- difficult job on earth, I think. Exactly. During those 30 days. I wouldn't like to be a judge, but I am chairing the judges, not to vote, but I have to see fair play, and you have to be there, and they do accept that. To be honest with you, I don't care who wins. What I care about is everybody goes home and they've Yeah. made friends for life. And these guys will tell you that they've got friends all over the world, and we do the best we can. We promote the country. India's beautiful, and what we want is everyone else from around the world to see India Yeah. and to appreciate it. All the license holders, mums and dads, will come with the girls. So you've got a huge cross section of the world's community, and all of us in India must welcome them and do the best for India, and that's what we're going to Oh, do. thank you I so think much. when it Thank comes you so to much. judging, the purpose is judged more than the beauty. Yes. And that's why it's called beauty with purpose. So I think when the judges are sitting there, they try and see what's the purpose, what has she done before. Every girl is beautiful. Every single girl in the world is beautiful. Oh, no, but then Indians are more beautiful. Of course. Thank you so much. On that note, I will not speak you more on this. Here ends the debate. Okay. So we have won, you mean? Yes, we won. Thank you so much. No, thanks a lot. Congratulations. Thank you. Thanks Thank to. Thank you so much. Thank Thank you you. for coming to the News24 Thank studio. you very much for having And I us. wish good luck to the pageant itself. Thank you very Julia, much. good luck. Thank you, and good And I luck hope to you have a Thank you. We hope you'll come successful along. competition. We'll come and interview everyone beforehand. Make it a News 24-hour evening, interviewing the girls. Let some of your viewers see how difficult it is to Oh, choose. absolutely. Absolutely. Please come. It'll be a long interview. Thanks, Carolina. Thank you very you. much. Thank you. Sini, thank you so much. you, everyone. Thank you.